डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। और आज हमारा जो टॉपिक है जो 10th सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है, तो उसका जो टर्म टू का है, तो उसका कुछ प्रैक्टिस पेपर आज लेके आया है वो डिस्कस करने के लिए। ओके, आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। एंड लेट स्टार्ट with the questions. So so basically the first question in the section A. So write the molecular formula of benzene and draw its structure. Okay, so the molecular formula of benzene, as we know, so basically the benzene is the structure of benzene is this is the formula C6H6, and the structure. So basically again we can, this is a the structure of the benzene is like this. Okay, so we are having six carbon in a ring structure, and this is how if we write this. So basically each carbon contain one hydrogen. And now we can see, so basically we are having C6H6 structure, and this is our the benzene. Okay, so this is the first question. And the second questions what we are having, this is the elements have been arranged in the following sequence on the basis of their increasing atomic masses. तो ये जो है हमारा जो अर्ली पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, जो एलिमेंट्स वो कैसे अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। तो वही एटॉमिक मास के हिसाब से ये यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट्स दिया गया है वो कौन सा है, फ्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, this is sulfur, this is chlorine, this is argon, and this is potassium. Okay, so this is the according to increasing their atomic mass. Okay, so now the question is pick up two sets of elements which have similar properties. ओके, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है ऐसा टू सेट्स है, तो हमारे पास ऐसा टू सेट्स मतलब एटलीस्ट वी आर हैविंग टू पेयर्स. So if we see this, so basically we can now understand. So basically in the group 17 in the modern periodic table, we are having fluorine and chlorine. So basically they are having similar properties. So the first questions is two elements, fluorine and chlorine, and the other pair is also there. So basically we can again if you think about the group one element, that is क्या है, वो जो एल्कली मेटल है, तो उसमें क्या रहता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम. तो इसमें सोडियम है और पोटासियम भी है. तो ये जो दो पेयर है, एक्चुअली दिस इज योर sodium and potassium, and fluorine and chlorine. So this is your group 17 member according to the modern periodic table, and this is group 1 element, the sodium and potassium in group 1. ओके, तो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बताया, जो द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स व्हिच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट where where the elements were arranged, but no we do not see like it is not like a the modern periodic table. So we can think about the octave rule. Okay, तो octave rule वो किसने किया था, तो let's check whether there is an octave rule or not. So basically if you see the elements like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so this is the fluorine is related with the octave rules like a 8. So basically in the 8 they are fluorine and chlorine, they are having like a similar properties. So basically if we arrange them in a period, so basically this will come under fluorine. So basically this group will be like a fluorine chlorine, this will group, and this is like a octave. Okay,
So at Octave rule, who proposed that one? So that is like a the if you remember we discussed so Newlands. Okay, so Newlands. So he proposed the octave rule. Like if you remember the sargam of the music, sa re ga ma pa dha ni sa. So basically every eight no elements will have the similar properties. So here the fluorine and chlorine. So basically they are having similar properties. They are belongs to halogen family, and it follow the octave rule. But what about the other? So basically they are also following the same, but if we think about this, so basically क्या हो रहा है यहाँ पे sodium, this is if you 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So because of now inert gas क्या हो रहा है यहाँ पे ये जो 8 एलिमेंट इसमें मैच नहीं कर रहा है. So actually again we learn, so basically this is when Newlands proposed this. So basically that time inert gas were not discovered. So इसीलिए क्या होता है जो ऑक्टेव रूल उस टाइम तक ये वैलिड था. जब इनर्ट गैस पीरियोडिक टेबल में आ गया तो वो ऑक्टेव रूल नो दैट वाज लाइक डिस्कार्डेड और इट वाज नो इनवैलिड. ठीक है, तो ऐसे ही ये जो सिंपल्स है और वी कैन इजीली एक्सप्लेन दिस. ओके, सो उसके बाद देखते हैं जो अगले क्वेश्चन क्या है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बेसिकली अगेन इट इज फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. Explain the variation in the following properties of the elements in the periodic table. तो जो पीरियोडिक टेबल का जो रहता है हमारा कितना जो टोटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी आर हैविंग 18 groups. So basically we are having 18 groups, 18 groups, and in the period, how many periods we are having? We are having like a seventh period. Okay, so we are having seventh periods and 18th group. तो अभी इसमें क्या बताया गया है? तो क्या पूछ रहा है जो एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल कैसे उसका चेंज होता है. सो बेसिकली एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सो बेसिकली द रेडियस ऑफ एटॉम, एंड अगेन वी लर्न, सो बेसिकली एटॉमिक रेडियस वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जो एक्चुअली द साइज ऑफ द एटम. तो साइज ऑफ एटम कैसे होता है? सो बेसिकली if you remember, so basically we arrange the periodic table, we arrange the elements according to their atomic mass, and then in the modern, so basically atomic number. So basically the number of number of protons increases when you are going from left to right in the periodic table, and because of the effective nuclear charge, so क्या होता है उसका साइज छोटा होते जा रहा है. तो ऐसा ही छोटा होता है from when we move from left to right. So basically size decreases, and again for the group 18, when we are having inert gas, so then size it increases. But from group 1, in a period, so physically if you think about group 1 to group 17, तो उसमें क्या होता जाएगा? सो साइज छोटा होते जाएगा, लेकिन फॉर ग्रुप 18 तो साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो होता है रेडियस होता है वो वैंडरवाल रेडियस होता है. तो इसीलिए क्या होता है वो एक्चुअली बड़ा होता है. और जब ग्रुप के एक इन द सेम ग्रुप वी मूव, सो बेसिकली वहां पे क्या होता है वो साइज बड़ा होता है. वैसा जैसे नीचे जाएंगे तो उसमें क्या होता है, सो साइज will increase. So because you are adding electron in the outermost cell of the different cell. So basically you are having for this case you are having in the same cell, whether it is if it is depending on the period, which one, if it is a second period, so basically we will have L cell or in the L orbit. So then what will happen, the electron we are the entering in the same orbit. So that is why, so the size is constantly it is decreases. But when we go move from top to bottom, तो वहां पे क्या होता है the next cell. So basically in the period, so we will see, so basically here we will see if the first period is K cell and then second is L, M, and so on. So basically it is increasing. So basically
the cell size is increases, that is why the radius of the element will increase. एंड द सेकेंड पॉइंट इट आस्क द मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर कैसे होता है, तो हमें पता है ना, जो राइट साइड जो एलिमेंट होता है वो नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है, जैसे हेलोजन है, इनर्ट गैस है, तो वो गैसियस है, तो उसके पहले जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सो बेसिकली दे आल्सो नॉन मेटल, एंड इन बिटवीन, सो बेसिकली लेफ्ट साइड वी आर हैविंग मेटल, left side we are having metal and right side non-metal, and in between we will have metalloids. So in between we are having some elements which is उसके पास क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर भी है और कुछ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, तो उसको हम मेटालॉइड बोलते हैं। तो और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इन ए पीरियड, सो बेसिकली इफ यू मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम द टॉप टू डाउन, तो हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, और इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। Okay, so because we know this is the non-metals, and again if we think about the boron, aluminum, so boron is metalloids in between metal and non-metal, but aluminum is no metal. The same way like a germanium. So basically when we move down the group, so basically metallic character increases, and when we move from left to right, so metallic character decreases. और वैलेंसी इन ए ग्रुप, तो उसमें वैलेंसी क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम जैसा होता है एक एक ग्रुप का, जैसे ग्रुप 1 NS1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो उसमें क्या होता है, जो एटॉमिक जो आउटर मोस्ट सेल में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो ग्रुप का जितना सारे जो मेंबर है, तो वो क्या होगा, वहां नहीं होगा वैलेंसी। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हेलोजन ग्रुप लेंगे तो उसमें क्या होता है, जो बाहर का सेल में कितना है, सो बेसिकली हेलोजन सेल में उसमें जो 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहर का जो सेल है, तो उसमें क्या होता है, जो one, if you get one extra electron, so basically this will achieve the octet state, so that is why their valency is 1. So basically in a group the valency is the same, or the each group will have the same valency. ठीक है, so then we'll discuss about the next question, and in the next question, so basically it says the define the term functional group. This is from again organic chemistry, or the carbon and its compound. So define the term functional group and identify the functional group present in the following compound. तो इसमें क्या है, हमने जो पढ़ा था क्लास में, जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, सो बेसिकली a group or group of atom, so basically when you are having this is group of atom, or atom, so which decide the chemical properties. तो क्या करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप वो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होता है कंपाउंड, सो वो डिसाइड करते हैं properties. So actually the functional group decide the chemical properties of the compound, and so basically functional group present as a atom or group of atom. तो यहाँ पे जो दोनों जो एग्जांपल है, तो वहाँ पे क्या है, जो OH है, तो OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। सो बेसिकली दिस इज योर अल्कोहल and this functional group, so this functional group is our, so this is we learned, so basically this is carbonyl functional group, and then we are having one hydrogen atom, so basically two hydrogen atom, so this is basically a aldehyde group. So CHO, we learn CHO is a aldehyde group, and here it is no aldehyde. So this is, you see this is a common name is formaldehyde, or here the IUPAC name, it will be like a one carbon, so methanol. So basically this will be methanol. And this, what would be the nomenclature for this one, so you are having 3 carbon, so basically this will be your propanol. So propanol or propanol, this is the propanol. Okay, so in the next, so basically this is a war option is there, in the second option
we are having, so basically draw the structural isomer of the hexane and write their IUPAC name also. So maybe we need for this one is more space, so maybe we'll go to the next. So basically this is the question. So basically जो ये क्या है, जो जनरल फॉर्मूला क्या है, इसमें कौन सा मैच करेगा, तो यहाँ पे जो होता है CnH 2n+2, इस रूल में ये फॉलो करेगा। जैसे n इक्वल टू 6, सो बेसिकली यू विल गेट n इक्वल टू 6, तो इसमें क्या आएगा C6H14 आएगा। तो ये जो है एल्केन है, और एल्केन का जनरल जो फार्मूला होता है, सो ऐसे C614, तो हम ऐसे एल्केन ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, so basically we can put 6 carbon in a chain, so this is CH2 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 CH3। तो इसमें क्या है, इसमें जो ओनली पॉसिबिलिटीज है, ओनली कार्बन एटम, देयर इज नो डबल बॉन्ड, नो फंक्शनल ग्रुप, सो ओनली द चेन आइसोमरिज्म इज पॉसिबल। तो हम ऐसे जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे, तो और कितना स्ट्रक्चर हो सकता है तो हम ड्रॉ करेंगे। सो बेसिकली इफ यू टेक वन मिथाइल ग्रुप and you substitute somewhere here, so we can draw like this, so basically CH3 CH3 CH2 CH2 सॉरी CH3 ये भी हो सकता है। और ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये हम बीच का कार्बन में भी डाल सकते हैं, ऐसे भी और एक आ जाएगा, तो क्या होगा CH3 CH2 CH CH2 CH3, ऐसा भी हो सकता है। और नेक्स्ट कार्बन में ये मिथाइल ग्रुप डालेंगे तो ये क्या है, पहले वाला आ जाएगा, क्योंकि नाउ दिस इज 5 कार्बन, सो दिस विल बी द ओनली 2 ऑप्शन यू आर हैविंग, सो बेसिकली थर्ड ऑप्शन you will have repeat the one. So what else could be possible, so basically again this methyl you can take it here and this will be another methyl, so basically you can have like this CH3 CH3 CH3, तो इसमें ऐसा हो सकता है CH2 CH3, ऐसा हो सकता है, ठीक है। Again, so there is not more possibility, so maybe you can put the 2 carbon here, so basically this you can have again CH3, and this is CH3, so this is also a possibility, yeah. So these are the possibility, we cannot do more than the structure, and these are the possible structural isomer, and all this isomer it comes because of your chain isomerism, तो अभी क्या करना है, ये सबका जो IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो कैसे करेंगे, जो पहले काउंट करते हैं, जो फर्स्ट जो इसमें क्या है वो लॉन्ग चेन है, तो इसमें कोई ऐसा सीधे से बात है, तो क्या आएगा N हेक्सेन और नॉर्मल हेक्सेन, सो क्योंकि हमारे पास 6 कार्बन है तो दिस इज जस्ट हेक्स N, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है, और जो सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसी कार्बन को जो मिनिमम लोकेंट वैल्यू देना चाहिए, तो नंबरिंग कौन सा साइड से होना चाहिए, दिस साइड और दिस साइड, I hope so you understand. So basically substitution is this side, so numbering will be from this side, this will be 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है, कितना कार्बन है, तो उसका 5 है, तो उसका रूट वाट क्या आएगा, पेंट आएगा, और जो सब्स्टिट्यूशन जो क्या है मिथाइल है, वो कौन सा कार्बन में है, 2 कार्बन में है, 2 नंबर, सो बेसिकली दिस विल बी 2 methyl, the root word is 5 carbon, so paint, and you are having the simple alkane, so this will be 2 methyl pentane. Now I hope you can do this one, so basically either way if you do the numbering तो क्या आएगा, सेम ही आएगा 3 1 2 3 4 5, तो इसका क्या होगा, सेम ऐसा ही 5 कार्बन है, सो लेकिन पोजीशन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूशन इट हैज चेंज, सो इसमें क्या आएगा, सो 3 methyl पेंटेन, ठीक है। तो ऐसा आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फिर जो यह है इधर ही जो सब्स्टिट्यूशन है, तो नंबरिंग इधर से आएगा, सो दिस इज लाइक ए 2 3
4. Now in the parent chain we are having 4 carbon. तो यहाँ पे क्या है substitution, नो सेकंड कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे कैसे रखेंगे, नो सो 2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल नो ब्यूटेन, क्योंकि हमारा जो कार्बन कितना काउंट किया है 4, तो रूट वर्ड फॉर 4 ब्यूट, सो दिस इज ए ब्यूटेन। ओके, तो यहाँ पे भी वो ऐसे ऐसे ही आएगा, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो एक ही जैसा आएगा, क्योंकि दिस इज द सिमेट्रिकल और नो बोथ द वे इट लुक सेम, तो ऐसा ही रहेगा 1 2 3 4। तो इसका जो है सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, 2 पोजीशन और 3 पोजीशन में है, तो ऐसे ही है, क्या होगा इसका जो नंबरिंग 2 सॉरी द 2 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल, उसके बाद क्या आएगा 4 carbon we are having butane. Okay, so these are the possible all structural isomer of hexane, and now we can count. So we are having basically 4 not 4, so 4 chain isomerism is possible, total isomer will be 5. Okay, so 5 isomer is chain isomerism is possible, and I hope you understand things, and hope it will be helpful for your exam, and thank you for your kind attention.